गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में री इम्पोज कर दिया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के, उन्हें रोकने के लिए जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता क्या है? एक स्पेशल परमिट रिक्वायर्ड होता है। जो भी फॉरेन नेशनल्स अगर कुछ एरियाज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगा है, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। ये एरियाज़ इनर लाइन से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में पड़ते हैं और इनको फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑर्डर 1958 के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है ये? इसलिए लगाया जाता है ताकि फॉरेनर्स को सेंसिटिव एरियाज़ में उनकी एंट्री को रेगुलेट किया जा सके, इंडिजिनस पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो है फ्रेजाइल रीजन्स में उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सके। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है कि फॉरेनर्स एक्सेप्ट भूटानी सिटीजन्स, उनको जो है इस पैप की ज़रूरत होती है एंटर करने के लिए और स्टे करने के लिए इन रीजन्स में। तो ऑफ कोर्स ग्रुप टूरिस्ट जो है वो ये पैप ले सकते हैं। ठीक है, पैप जो है वो उसी स्पेसिफाइड एरिया, राउट और टाइम के लिए वैलिड होता है जिसके लिए इशू किया गया है। जो सिटीजन्स हैं अफगानिस्तान के, चाइना के या पाकिस्तान के, या जो फिर पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको प्रायर अप्रूवल होम मिनिस्ट्री से भी लेना पड़ता है पैप के अलावा भी। ठीक है, डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स जो जाना चाहते हैं ऐसे एरियाज़ में, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की। फॉरनर्स को फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, विद इन 24 आवर्स वहाँ पर अराइवल के उन्हें बताना होता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो री इम्पोज जो किया जा रहा है पैप, वो बेसिकली हम मूवमेंट्स जो है फॉरेनर्स की मणिपुर में, उनको हम क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले देखा गया था कि एक मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी, वो यूएस से यहाँ पर मणिपुर में आके और जो है कुछ भड़काने का काम कर रहे थे, मीतीज़ और कुकीज़ के बीच में लड़ाई करवाने का काम कर रहे थे। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो सके और अनऑथोराइज्ड एंट्रीज़ को रोका जा सके। पैप रिजीम को लिफ्ट किया गया था मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से जनवरी 2011 में, ताकि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। बट अब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, तो वहाँ पे इसलिए इसको री इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें 31 एमपीज़ हैं, उसको फॉर्म किया गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल, जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, उसे रिव्यू किया जा सके। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एड हॉक बॉडी है जो कि एक्ट करती है एज अ मिनी पार्लियामेंट, डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए स्पेसिफिक मैटर्स के विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसको सेटअप किया गया था किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। इसमें मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, फ्रॉम बोथ रूलिंग पार्टीज एंड ऑपोजिशन। इसको सेटअप किया जाता है आफ्टर वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट जब मोशन पास कर देता है, और दूसरा जो है हाउस भी जब उसको एग्री कर लेता है। और मेंबर जो है जेपीसी के, वो पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करती है। जो रिकमेंडेशंस होती हैं जेपीसी की, वो बाइंडिंग तो नहीं होती है गवर्नमेंट पर, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस होती हैं। मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एज कम्पेयर टू दैट एक जो से होती है वो थोड़ी अथॉरिटेटिव होती है। तो अब कुछ ऐसे इंस्टेंस जब ये जेपीसी बनाई गई, तो जैसे एलोकेशन और प्राइसिंग करनी थी जब टेलीकॉम लाइसेंसेस की या स्पेक्ट्रम की, उसको एग्जामिन करने के लिए जेपीसी बनाई गई। फिर जो पेस्टिसाइड पाए गए थे कोका कोला या फिर पेप्सी में, तो उसके लिए भी जेपीसी बनाई गई। स्टॉक मार्केट स्कैम पर, फिर बोफोर्स स्कैम पर जो है सिक्योरिटीज़ और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इरेगुलेरिटी की इंक्वायरी के लिए भी जेपीसी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्मम थेरेपी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा जो है, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्मम थेरेपी दी है 567 इंडिविजुअल्स को साइमल्टेनियसली। तो ये एक यूनिक और ट्रेडिशनल हीलिंग है, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर होती है। ड्रगलेस, नॉन इन्वेजिव, सिंपल थेरेपी होती है पेन मैनेजमेंट के लिए। तो बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं कुछ, लगभग 108 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बॉडी में, उनको जो है वो एक्टिवेट करके जो है थेरेपी दी जाती है। रैपिड रिलीफ मिलता है इससे मस्कुलोस्केलेटल पेन में, इंजरीज़ में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में।
खासकर एक्यूट या क्रॉनिक डिसीजेज जैसे स्ट्रोक, आर्थराइटिस, ट्रॉमा रिलेटेड इंजरीज में इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये अभी तक सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो सिद्धा मेडिसिन क्या है? एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हीलिंग है जो ओरिजिनेट हुई साउथ इंडिया से। लिटरेरी एविडेंस जो है इसके संगम या रहस्य में देखने को मिलते हैं, और ये सिस्टम जो है सिद्धार्थ, जो कि मोस्टली तमिलनाडु से थे, उनके ही जो है वर्क पर ये बेस्ड है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सिद्धा मेडिकल सिस्टम भी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये टॉपिक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने 20th फाउंडेशन डे जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उसको एड्रेस किया है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2004 द्वारा। क्वाजी जुडिशल बॉडी है, पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट है इनके पास। सेफ गार्ड करना एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में दिए गए हैं, वो इसका एम है। एडजुडिकेटरी, एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी, तीनों ही इसके पास पावर्स हैं। यही डिसाइड करता है बॉडी कि किस इंस्टीट्यूशन को स्टेटस एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मिलेगा। कमीशन के पास पावर होती है कैंसिल करने की माइनॉरिटी स्टेटस भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डार्क कॉमेट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो क्लोजली स्टडी कर रहे हैं न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम डार्क कॉमेट्स कहते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है, इनकी कोई ग्लोइंग टेल्स नहीं होती है, और ये रिजेंबल करते हैं एस्टेरॉइड्स की तरह। ठीक है, ऑफ्टन ये स्मॉल होते हैं, कुछ ही मीटर्स के से लेकर कुछ 100 मीटर्स वाइड हो सकते हैं। बट ये एस्टेरॉइड्स नहीं होते हैं क्योंकि ये सडन एक्सेलरेशन इनमें होती है। ये स्पिन करते हैं बहुत ही तेज़ी से, इलोंगेटेड एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। पहला जो हमें डार्क कॉमेट जो है वो 2016 में उसका इंडिकेशन देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सदर्न बेंच जो है एनजीटी की, उन्होंने 3 डे अल्टीमेटम इशू किया है केरला गवर्नमेंट को कि जो बायोमेडिकल और सॉलिड वेस्ट की वो डंपिंग कर रहे हैं तमिलनाडु के, उसे जल्दी से जल्दी एड्रेस करें। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था एफिशिएंट और टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रिंसिपल बेंच इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। जुडिशल मेंबर्स इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं, और जो इसके एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं उनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है इन फील्ड्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसका स्ट्रक्चर ऑफ बेंचेस अगर हम देखें, हर बेंच में कम से कम एक जुडिशल मेंबर और एक एक्सपर्ट मेंबर ज़रूर होता है। ठीक है, और एनजीटी जो है जितने भी सिविल केसेस होते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, वो डील करता है, चाहे वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, एयर जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो, ये सब जो है एनजीटी ही हैंडल करता है। एक तरह से एपेलेट अथॉरिटी की तरह काम करता है इन्वायरमेंटल केसेस में, और 6 महीने के अंदर अंदर, फाइल होने से 6 महीने के अंदर अंदर ये केसेस को रिजॉल्व करना होता है इसे। ठीक है, तो केरला ने कहा है कि या तो वेस्ट आप रिट्रीव करो और फॉर्मलाइज करो कि एग्रीमेंट आप तमिलनाडु के कॉमन तमिलनाडु के कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ प्रॉपर डिस्पोजल के लिए एनजीटी ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लोकायुक्त। ये टॉपिक भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने लोकायुक्त की इन्वेस्टिगेशन जो मुडा स्कैम से रिलेटेड सीएम के फैमिली के अगेंस्ट हो रही थी, उसको एक तरह से रोक दिया है, क्योंकि पटिशन फाइल की गई है कि इसके ऊपर सीबीआई का प्रोब होना चाहिए। तो लोकायुक्त एक स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। इंस्पायर्ड है ये ऑम्बड्समैन सिस्टम जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। इसको पहली बार रिकमेंड किया गया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 द्वारा, जो कि चेयर्ड बाय मोरारजी देसाई था। पहला लोकायुक्त जो है वो इस्टेब्लिश हुआ महाराष्ट्र में 1971 में। 2013 में हमने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट भी पास किया, जिसमें कि लोकपाल यूनियन लेवल पर, लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पर बनाने को मैंडेट किया गया। और इसमें कहा गया कि 50% जो मेंबर्स हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और विमेन के जो है वो मेंबर्स होने चाहिए। लोकायुक्त एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता इसका। और लोकायुक्त की सिलेक्शन और रिमूवल कैसे होता है? टिपिकली कोई फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर उनका रिमूवल करना है तो इम्पीचमेंट जो है वो स्टेट असेंबली द्वारा करवाई जाती है। ठीक है,
करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को एड्रेस करने को, इन्वेस्टिगेट करने का इनकी पावर्स हैं। स्पीडी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इंश्योर करते हैं, और ये रिकमेंड कर सकते हैं एक्शन, लेकिन कोई इन्फोर्समेंट पावर्स इनके पास नहीं होती हैं जब तक स्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वो पावर्स इन्हें ना दे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने एक लैंडमार्क अचीवमेंट जो है वो हासिल की है, और लगभग ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोस $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं सिंस अप्रैल 2000 अभी तक अगर हम देखें तो एफडीआई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक कंपनी या फिर इंडिविजुअल एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री के बिजनेस में अगर कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट में कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ही नहीं हो रहा है बल्कि एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी हो रहा है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। दो तरह की होती है एफडीआई, एक ग्रीन फील्ड जिसमें कि न्यू फैसिलिटीज़ जो है स्क्रैच से स्टार्ट की जा रही होती हैं। फिर ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको आप मर्जर कर लो, एक्विजिशन कर लो या जॉइंट वेंचर कर लो और एक्सपैंड कर दो उसके ऑपरेशंस, उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडीआई जो इंडिया में है वो फेमा के अंदर गवर्न होती है, और उसको डीपीआईआईटी जो है वो एडमिनिस्टर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। दो तरह की होती है, ऑटोमेटिक राउट, मतलब कि जिसमें कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एफडीआई ला सकते हो इंडियन कंपनीज़ में। एक होती है गवर्नमेंट राउट, जिसमें कि कुछ जो है स्ट्रेटजिक सेक्टर्स आते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अगर हम देखें कि ऑटोमेटिक राउट में आप एफडीआई ला सकते हो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में, ई कॉमर्स में, बायोटेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन अगर गवर्नमेंट आप कुछ ऐसे सेक्टर्स में ला रहे हो जो स्ट्रेटजिक सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, फूड रिटेल, सैटेलाइट ऑपरेशंस। ठीक है, अब प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनमें एफडीआई अलाउड ही नहीं है। ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, गैम्बलिंग, लॉटरीज, चिट फंड्स, रियल एस्टेट, टोबैको इंडस्ट्री। इंडिया के अगर हम टॉप एफडीआई के सोर्सेज देखें तो सबसे ज़्यादा हमें सिंगापुर, फिर मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड्स और जापान से एफडीआई आया है। और 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो ये $1 ट्रिलियन की टोटल हमारी अगर हम देखें एफडीआई, उसका 70% सिर्फ इसी पीरियड के बीच में आया है, पिछले 10 साल के अंदर ही। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला एफडीआई के इनफ्लोज में। $42 बिलियन की तो जो ये एफडीआई है वो पिछले सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में ही आई है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is protected area regime. This topic is important for your governance and your polity section both. So Union Ministry of Home Affairs has reinstated the protected area permit in Manipur, Nagaland and Mizoram due to security concerns which are stemming from the influx of individuals from neighboring countries. So as we saw in the social media also, that a Christian missionary from US arrived in Manipur few days or few weeks back, and he started giving political ranting against the Metis, and he was provoking the Cookies to fight against the Indian state and also Metis. So that's why this foreign interference is being cited as a major concern, and that's why this protected area regime has been imposed in this region. Okay, not just this case, but several such incidents were reported from this region. So, what is this protected area permit? So, it is a special permit which is required by foreign nationals to visit certain areas in India which are sensitive due to the proximity to international borders. So, these areas fall between the inner line and the international borders as defined under the Foreigners Protected Areas Order of 1958. So this protected area permit regulates the entry of foreigners in sensitive areas. It also protects indigenous populations and their unique cultural heritage. It also aims to minimize the ecological disturbances in the fragile regions. So what are the key features of this regime? So foreigners who accept the Bhutanese, they need a PAP to enter and stay in these regions. They can of course obtain these PAP through group tourist permissions also. PAP is valid only for the specified area, route, and time. But citizens of Afghanistan, China, and Pakistan, they and also those of Pakistani origin, they require prior permission from the Home Ministry apart from PAP. Okay, diplomats and officials they require special instructions from External Affairs Ministry before visiting these locations. And foreigners, after even obtaining the PAP, they must register with the FRO of that district within 24 hours of the arrival. So the government has reimposed this PAP so that the movement of foreigners in Manipur
can be closely monitored, and border security can be strengthened, and unauthorized entries can be prevented. Okay, so this PAP regime was lifted from Manipur, Mizoram, and Nagaland in January 2011, so as to promote tourism in these areas. But now the dynamics, especially the security dynamics, have changed, so that's why it has necessitated this reimposition. Okay. So the next topic is Joint Parliamentary Committee. This topic is important for your polity section. So a Joint Parliamentary Committee, which comprises of up to 31 MPs, will be formed to review the Constitution 129th Amendment Bill, which is basically the One Nation, One Election Bill. So this JPC, it's an ad hoc body which acts as a mini parliament to carry out detailed scrutiny of a specific matter within a specific time frame. So it is set up by the parliament for a special purpose like the detailed scrutiny of a subject or bill. It also has members from both houses of parliament, from the ruling and the opposition parties both. So it is set up after one house of parliament has passed a motion and the other one has agreed to it. The members of the JPC are decided by the parliament, and the recommendations of JPC are not binding on the government. Okay, so a few instances when the JPC was set up to investigate certain instances include examining the allocation of spectrum after the 2G scam, then the pesticide residue case which was found in the Coke and Pepsi products, the stock market scam, the irregularities that were there in securities and banking transactions, and also into the Bofors scam that was done during the Rajiv Gandhi regime. Okay, so the next topic is Varmam therapy. This topic is important for your social issues and your art and culture section. So the National Institute of Siddha has set a Guinness World Record for providing Varmam therapy to 567 individuals simultaneously. So, Varmam therapy is a unique and traditional healing modality within the Siddha system of medicine, and it has long been revered for its effectiveness in treating various health conditions. So, it is a drugless, non invasive, simple therapy which is used in pain management, and it is considered that the vital energy points located in the human body can be activated to provide relief. And this Siddha system of medicine has identified 108 such points in the body, and this therapy provides rapid relief to musculoskeletal pain, injuries, and neurological disorders. And it is scientifically grounded therapeutic practice which is used to treat acute and chronic diseases, including stroke, arthritis, and trauma related injuries. Okay, so the system of medicine is a traditional system of healing that originated in South India, and literary evidences of Sangam era also showcased the origin of this system around 10,000 BC. The system has been built on the works of Siddhars, who were mostly from Tamil Nadu. That's why this is called the Siddha system of medicine. Okay. So the next topic is National Commission for Minority Educational Institutions. This topic is important for your polity section. So Union Minister of Education has recently addressed the 20th Foundation Day of the National Commission for Minority Educational Institutions in New Delhi. So this was established by the National Commission for Minority Educational Institutions Act of 2004, and it is a quasi-judicial body which has been endowed with the powers of a civil court for the purpose of discharging its functions under the Act. It aims to safeguard the educational rights of the minorities enshrined in Article 30, Clause 1 of the Constitution. So this commission has three main roles: adjudicatory, advisory, and recommendatory. So the powers of the commission include the matters that relate to the deciding of questions related to the status of any institution as a minority educational institution, and the commission has the power to cancel the minority status of an educational institution as well. Okay, so the next topic is dark comet. This topic is important for your science and tech section. So NASA scientists are closely studying a new class of celestial objects which are known as dark comets. And these celestial bodies, they lack glowing tails, which is typically a feature of comets, and they resemble asteroids. They are often small, just a few meters to a few hundred meters wide, but they're not asteroids due to their sudden accelerations. They often spin quite rapidly. They follow elongated elliptical paths, and the first indication of a dark comet came in 2016. Okay, so the next topic is National Green Tribunal.
This topic is important for our environment section. So, the Southern Bench of NGT has issued a 3-day ultimatum to the Kerala government to address the issue of illegal biomedical and solid waste dumping in Tamil Nadu. And NGT, we know, that was established under the National Green Tribunals Act of 2010 for the efficient and timely disposal of cases related to environmental protection, forest conservation, and natural resource management. So, the principal bench is located in New Delhi with additional benches in Bhopal, Pune, Kolkata, and Chennai. So its chairperson is the retired Supreme Court judge. Judicial members include the retired High Court judges, and expert members basically the professionals with at least 15 years of experience in the fields related to environment or forest conservation. Each bench includes at least one judicial member and one expert member to ensure balanced decision making. So NGT handles cases which involve several environmental issues and laws listed in the Schedule 1 of the NGT Act, like the uh, air, Water and Air Prevention and Control of Pollution Acts, the Forest Conservation Act, Environment Protection Act, Public Liability Insurance Act, Biological Diversity Act. So this NGT acts as an appellate authority for environmental cases, and it is mandated to resolve the cases within 6 months of filing of them. Okay, so the NGT has ordered that Kerala must either retrieve the waste or formalize an arrangement with Tamil Nadu's common biomedical waste treatment facility for proper disposal. Okay. So the next topic is Lokayukt. This topic is important for our polity section. So Karnataka High Court has stayed a Lokayukt investigation into the Muda scam involving CM's family, citing a petition which is seeking a CBI probe in this matter. So what is Lokayukt? It is a state level anti-corruption body which is tasked with investigating complaints of corruption and maladministration against public officials. So it is inspired by the ombudsman system which exists in Scandinavian countries. It was recommended by the first Administrative Reforms Commission of 1966, which was chaired by Morarji Desai. The first Lokayukt was established in Maharashtra in 1971, and it and we also have the Lokpal and Lokayukt Act of 2013, which mandates the establishment of Lokpal at union level and Lokayukt in states. So, as per this 2013 Act, it is mandatory to have at least 50% of the members belonging to SC, ST, OBCs, minorities, and women. Lokayukt is a statutory body without any constitutional status. So Lokayukt selection and removal includes that it should typically be a former Chief Justice of a High Court or former Supreme Court judge. And removal of a Lokayukt requires impeachment by the State Assembly. Okay. So the Lokayukt investigates matters of corruption and maladministration. It also ensures speedy redressal of public grievances. It can recommend action, but it lacks any binding enforcement powers unless, of course, it is provided by the state specific legislation. Okay. So the next topic is foreign direct investment. This topic is important for your economy section. So India has achieved a landmark milestone with gross FDI inflows crossing $1 trillion since April 2000. FDI refers to an investment which is made by a company or individual from one country into a business or establishment of another country. It not just involves the transfer of capital but also expertise, technology, and skills. So there are two types of FDI. First is the greenfield one, which basically establishes new facilities from scratch. Okay, then we have the brownfield investments in which the operations are expanded through mergers, acquisitions, or joint ventures. Basically, you are investing in an existing company. Okay, how is FDI governed in India? It is governed by the FEMA, and it is administered by the DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry. There are two types of routes through which FDI can come in India. First is the automatic route, in which there is no requirement to have government permission. But then there is also government route. There are certain sectors in which, if you want to invest, then you need the relevant government approval from that particular ministry or department under which the particular sector comes. Okay, so if we look at the automatic route, then these can include FDIs into agriculture and animal husbandry, e-commerce, biotechnology, renewable energy, and other sources. Then there are certain strategic sectors like banking, broadcasting, foods, retail, and satellite operations, in which there is government permission required. Then there are prohibited sectors in which FDI is not allowed, like the atomic energy, gambling, lotteries, chit funds, real estate, and tobacco industry. Okay, so if we look at the statistics, then India received the highest FDI inflows from Singapore, followed by Mauritius, US, Netherlands, and Japan. And in the last one decade, since the Modi government has taken power,
70% of the total FDI has come into India. Okay, in the last or in the current fiscal year, there has been 26% FDI rise to $42.1 billion, which is underscoring India's growing appeal as a global investment destination. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.